In this video, we will be discussing weekly and daily chart of KSE100 and some other scripts. So this analysis will remain intact as long as some other video will be posted, because next video will be posted on weekly analysis when the scenario will be changed. So over here we can see the KSE100 weekly chart. KSE100 वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास जो मूविंग एवरेज है वो हमें बेरिश ऑर्डर में नजर आती है, बुलिंगर बांड हाईली स्क्वीज्ड है। और अगर हम इस MACD के ऊपर नजर डालते हैं तो इस बार कन्वर्जिंग टुवर्ड्स जीरो लाइन आफ्टर पोस्टिंग अ बुलिश डाइवर्जेंस। और अगर हम स्टोकिस्टिक को देखते हैं तो इस वक्त ये एक न्यूट्रल जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है एंड इट हैज टेंडेंसी टू जनरेट अ बुलिश क्रॉसओवर। सो बाय कंपेयरिंग ऑल दीस फोर एनालिसिस वी कैन से कि इट इज इन अ रेंज बाउंड और साइडवे ट्रेंड के अंदर है। तो आने वाले वीक्स के अंदर इसके अंदर आपको मेजर जो मूवमेंट्स हैं वो शायद होती हुई नजर ना आए टिल द मोमेंट इट हैज शिफ्टेड इट्स ट्रेंड हाईली इन बुलिश साइड और बेरिश साइड। इसी तरह से अगर हम इसके डेली चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं सो मूविंग एवरेज जो है वो अगेन इन बेरिश पैटर्न नजर आती हैं। और बुलिंगर पॉइंट जो है आफ्टर स्क्वीजिंग वेल it has been expanding now, so it has more tendency to move upward as compared to on weekly chart. और अगर हम MACD पे नजर डालते हैं तो इस बार द कन्वर्जिंग टुवर्ड्स जीरो लाइन आफ्टर पोस्टिंग अ बुलिश डाइवर्जेंस। और स्टोकिस्टिक को अगर हम देखते हैं तो स्टोकिस्टिक जो है वो इस वक्त एक अच्छा बुलिश साइड के ऊपर मूवमेंट या मोमेंटम जो है वो शो कर रहा है। So in this way, again, we can see that KSE100 is in a range bound, but it has more tendency compared to its bearish side. It has more tendency to move upward. अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर RSI को एनालाइज करें तो ये इस वक्त जो है वो न्यूट्रल जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है बट विद अ पॉजिटिव स्लोप विच शोज के इट हैज मोर टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। अगर हम इसके वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस रीजन को डिस्कस करें, सपोर्ट लेवल के ऊपर 40,700 का एंड 39,700 का नजर आता है। वन ऑन द रेजिस्टेंस रीजन जो है वो 41,800 एंड की रेजिस्टेंस टू वॉच इज 43,270। 43,270 का जो रीजन है KSE100 के अंदर वो की रेजिस्टेंस लेवल है एंड इसको वॉच करने की जो है वो जरूरत है आने वाले वीक्स के अंदर जो है उसमें अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं। और अगर हम इसका डेली RSI को देखें सो इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ वेरी बुलिश साइड। और इसके अंदर अगर हम एक और चीज देखें तो हमारे पास ये एक फ्लैग शेप जो है वो भी नजर आ रही है जो कि बुलिश फ्लैग शेप है। इट इज द कंटिन्यूटी पैटर्न। इसको हम देखते हैं तो की लेवल जो सपोर्ट के रीजन के अंदर आते हैं वो 40,700, 40,400 एंड 40,000 आर द की लेवल ऑन सपोर्ट रीजन। और रेजिस्टेंस साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 41,630 एंड 42,350। सो की लेवल टू वॉच ऑन डेली चार्ट इज द 42,350 जो कि इसके अंदर बुलिश साइड के ऊपर कंफर्मेशन साइड पे आपको नजर आएगा। एंड आने वाले दिनों के अंदर अगर हम देखते हैं ये अपना बुलिश टेंडेंसी जो है इसको इंक्रीज करती है। सो the region to achieve the level to achieve on KSE100 is 44,000. But if this tendency is increasing on because every passing day it adds more on a bullish side, so then tendency to achieve this level will be increasing on. So आपने इसको बगौर वॉच करना है, 100 इंडेक्स के मूवमेंट को वॉच करना है, की लेवल्स को वॉच करना है। अगर ये अपने रेजिस्टेंस रीजन को ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता जाता है तो इट मींस इट विल बी शिफ्टिंग इटसेल्फ टू अ बुलिश साइड। और अगर ये अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करना शुरू हो जाता है तो इट मींस इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द बेरिश। द नेक्स्ट स्क्रिप्ट टू डिस्कस इज, और अगर हम वीकली चार्ट ऑफ PSO पे नजर डालें तो मूविंग एवरेज में बेरिश ऑर्डर नजर आती है, बुलिंगर बैंड जो है वो हमें बेरिश साइड पे नजर आता है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग ऑन चार्ट पैटर्न जो हमें नजर आता है इसी एरिया के अंदर, इसी रीजन के अंदर हिस्टोरिकली इन अप्रैल 2020 हमें एक सॉलिड जो है वो बुलिश एनगल्फिंग नजर आती है। और अगेन इसी रीजन के अंदर अगर हम देखते हैं वीकली चार्ट्स के अंदर तो हमें यहाँ पे एक बुलिश शूटिंग स्टार और बुलिश हैमर नजर आता है विच इज अ गुड साइन। और अभी तक अगर हम देखते हैं तो कई वीक्स के अंदर वो इस स्पोर्ट रीजन के ऊपर जो है वो प्राइसेस आके रिड्यूस होना जो है वो कम होती नजर आ रही है। अगर हम MACD के ऊपर नजर डालें तो वीकली चार्ट के अंदर MACD की बार्स रिड्यूस होना एंड कन्वर्ज टुवर्ड्स जीरो लेवल होना शुरू हो गई आफ्टर पोस्टिंग बुलिश डाइवर्जेंस। और अगर हम MACD स्टोकिस्टिक के ऊपर नजर डालते हैं तो स्टोकिस्टिक जो है वो इस वक्त बेरिश जोन के अंदर नजर आ रहा है। सो अगेन इट कैन बी सेड on the basis of these comparative analysis of four or five indicators जो हमें इसमें नजर आ रही है कि इसके अंदर लिमिटेड साइड में मूवमेंट आपको नजर आएगी। अगेन इस वक्त जो PSO है वो एज वी हैव डिस्कस्ड ऑन द
KSE 100 इंडेक्स, इट इज ट्रेडिंग इन रेंज बाउंड एरिया। सो आने वाले वीक्स के अंदर इसमें हम देखेंगे कि बुलिश बेरिश साइड के ऊपर जो मूवमेंट्स आएंगी, दीज विल बी रिवर्स शॉर्पली बिकॉज इट इज इन एक्यूमुलेशन जोन। अगर हम इसके डेली चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं तो हमारे पास मूविंग एवरेज जो है वो बेरिश ऑर्डर में नजर आती है, ब्लिंकर बैंड हाईली स्क्वीज्ड है, एंड एमएसीडी की जो बार्स हैं दे आर कन्वर्जिंग टू जीरो लेवल आफ्टर पोस्टिंग अ बुलिश डाइवर्जेंस व्हिच इज अ गुड साइन कि आने वाले दिनों के अंदर हमें इसमें एक अपवर्ड साइड के ऊपर मूवमेंट जो है वो नजर आ सकती है। और स्टोकेस्टिक को देखें अगर हम, तो स्टोकेस्टिक जो है वो इस वक्त बुलिश क्लास ओवर जनरेट कर चुका हुआ है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखें तो हमारे पास ये एक फॉलिंग वेज है जो हमें नजर आती है, जिसके अंदर प्राइस ट्रेड हो रही है पिछले कई दिनों से। और ये एक आफ्टर दिस मॉर्निंग स्टार के बाद हमें नजर आती है, विच इज अ गुड साइन कि ये कंटिन्यूटी पैटर्न हो सकता है, एक पेनेंट बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी रिस्पॉन्स में प्राइस के अंदर टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड जो है वो हमें नजर आ रही है। और अगर हम इसका पीएसओ का वीकली आरएसआई देखते हैं तो ये हमारे एक बेरिश जोन के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन और आने वाले दिनों के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन की वजह से कैप्ड भी है। की लेवल्स टू वॉच इन कमिंग वीक्स फॉर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रीजन आर 124 का एक रेजिस्टेंस रीजन है और 144 का रेजिस्टेंस रीजन है। अगर हम सपोर्ट को देखते हैं वीकली बेसिस के ऊपर तो हमारे पास 110 एंड 92 के गुड सपोर्ट्स नजर आती हैं, एंड प्राइस विल ऑलवेज बी प्रायोरिटाइजिंग इटसेल्फ टू bounce back from these levels. So on weekly basis हम इसको देख सकते हैं कि जब जब price has the tendency to hit such level, हम इनको accumulate करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं फॉर अ बेटर रिटर्न इन आवर साइड। और अगर हम डेली आरएसआई को देखें तो डेली आरएसआई जो है इस वक्त न्यूट्रल जोन में बट विद पॉजिटिव स्लोप विच इज अ गुड साइन। और हम चार्ट के ऊपर देखें तो इस वक्त तक जो है वो आफ्टर दिस मॉर्निंग स्टार प्राइस ने अपने रिट्रेस जो है वो ऑलमोस्ट 76% एंड 62% के रीजन के दरमियान जो है प्राइस ने अपनी रिट्रेस ली है, एंड इट हैज द मोर टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। और इसी तरह से अगर हम जो है इट हैज मोर टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। अगर हम इसके की लेवल्स देखें तो हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस रीजन है वो 118 एंड 126 के नजर आते हैं, एंड ऑन सपोर्ट साइड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 109 का जो रीजन है दैट्स द गुड सपोर्ट रीजन। सो in this way we can say that PSO has the tendency to trade in a range। और इसके अंदर जो हमें देखेंगे कि मेजर बेरिश शॉर्प वेव्स हमें नजर नहीं आएंगी, बट आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हमारे पास अगर हम इसको देखते हैं तो टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड जो है वो हमें ज्यादा नजर आएगी। अगर हम लकी सीमेंट के वीकली चार्ट के ऊपर नजर डालें तो उसके अंदर मूविंग एवरेज जो हमें बेरिश पैटर्न नजर आती है, और ब्लिंगर बैंड जो है इट्स वेरी स्क्वीज्ड एट दिस टाइम। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर इस प्राइस के अंदर आपको हाई वोलेटिलिटी नजर आएगी, एंड इट हैज द मोर टेंडेंसी टू मूव इन अपवर्ड बिकॉज एमएससीडी जो वीकली बेसिस के ऊपर है इट्स बार्स आर रिड्यूसिंग एंड कन्वर्जिंग टुवर्ड्स जीरो लेवल आफ्टर पोस्टिंग बुलिश डाइवर्जेंस। और इसी तरह से अगर हम स्टोकेस्टिक को देखते हैं तो इट हैज more tendency as compared to it has more tendency to move upward. So in this way, we can say that Lucky Cement will also be trading in a range, but it will have the more tendency to move upward rather than to decrease in price. So sharp move जो bearish side के ऊपर है वो अब लकी सीमेंट के अंदर आपको कॉमन नजर आना शुरू हो जाएंगी, और ये एक रेंज में ट्रेड होता नजर आएगा। इसी तरह से अगर हम इसके डेली चार्ट के ऊपर नजर डालें तो हमारे पास यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज जो है वो बेरिश पैटर्न में नजर आती है, ब्लिंगर बैंड स्क्वीज होता है वो नजर आता है, एमएसीडी जो है वो अगेन कन्वर्जिंग टुवर्ड्स जीरो लाइन आफ्टर पोस्टिंग अ बुलिश डाइवर्जेंस। और इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस वन की स्टोकेस्टिक जो है वो इस वक्त हमें एक पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर के साथ जो है वो बेरिश टेरिटरी से अपवर्ड साइड पे मूव करता हुआ जो है वो उसमें हमें नजर आ रहा है। सो दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आने वाले दिनों के अंदर लकी सीमेंट के अंदर भी साइडवे ट्रेंड जो है वो प्रिवेल करेगा, बट विद अपवर्ड आर बुलिश टेंडेंसी। और अगर हम लकी सीमेंट के वीकली आरएसआई के ऊपर नजर डालें तो हमें यहाँ पे एक क्लियर मैसेज नजर आता है कि बुलिश आरएसआई हैज पोस्टेड अ बुलिश डाइवर्जेंस, and at the moment it is trading in the neutral zone but it has tendency to move upward, and key levels to watch on weekly basis जो की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 428 एंड 460 का रीजन है, एंड सपोर्ट लेवल्स आर 389 एंड 370। सो दीज आर द सपोर्ट लेवल्स ऑन वीकली बेसिस के ऊपर। और अगर हम डेली आरएसआई ऑफ लकी सीमेंट जो है उसके ऊपर नजर डालते हैं तो यहाँ पे इट हैज द टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड बिकॉज इट इज ट्रेडिंग इन नो इट इज ट्रेडिंग इन neutral zone but with a high positive slope which shows that it has more tendency to move upward। और अगर हम इसी तरह से इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे
एक बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो RSI के अंदर भी नजर आता है। एंड की लेवल टू वॉच इन ऑन डेली बेसिस की रेजिस्टेंस लेवल्स आर 412 412 और 433 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। और अगर हम सपोर्ट लेवल्स के ऊपर नजर डालते हैं तो हमारे पास 390 एंड 369 के लेवल्स जो है वो हमें नजर आते हैं। और अगर हम वीकली चार्ट ऑफ NRL जो है उसके ऊपर नजर डालें तो हमारे पास अगेन वही सेम ऑर्डर जो है जो ओवरऑल मेजर स्क्रिप्ट्स ऑफ KSE100 के अंदर नजर आता है। मूविंग एवरेज जो है वो इन बेरिश ऑर्डर नजर आ रही है। बुलिंगर बैंड हाईली स्क्वीज्ड है, so it has the more tendency to be volatile in coming weeks। एंड और अगर इसके अंदर हम टेंडेंसी टू मूव देखें तो चूंकि वीकली बेसिस के ऊपर MACD bars are reducing or converging towards zero line with after posting a bullish divergence। तो again this will be in range bound because resistance levels are above it। करंट प्राइस जो हमारे पास नजर आ रही है, मूविंग एवरेज जो है वो उस रीजन के अंदर हमें नजर आ रही है। और अगर हम स्टोकेस्टिक के ऊपर नजर आते हैं so it is trading in the bearish zone। So in this way MACD has is showing the signal of bullish divergence, but on the other side moving averages are on bearish side, so it shows that it will be a range bound in the coming weeks, but with the पॉजिटिव टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड्स। और अगर हम इसके डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो मूविंग एवरेज जो है वो बेरिश पैटर्न में नजर आती है। ब्लिंगर बैंड हाईली स्क्वीज नजर आता है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज हमें इस NRL के चार्ट के ऊपर नजर आती है, डेली बेसिस के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नजर आता है। और MACD के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो वो इस बार्स आर रिड्यूसिंग आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स जीरो लाइन आफ्टर पोस्टिंग अ गुड बुलिश डाइवर्जेंस। और अगर हम स्टोकेस्टिक के ऊपर नजर डालते हैं तो इट हैज highly tendency, it has a very high tendency to move upward side because it is with a positive slope with a bullish cross over। आप इसमें देख सकते हैं तो इस वक्त ये बुलिश जोन के अंदर जो है वो एंटर हो रहा है। अगर हम वीकली RSI ऑफ NRL को डिस्कस करते हैं तो अगेन यहाँ पे हमें इसके अंदर बुलिश टेंडेंसी नजर आती है बिकॉज विद पॉजिटिव स्लोप एंड इट इज ट्रेडिंग इन न्यूट्रल जोन एंड इट हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द न्यूट्रल जोन फ्रॉम बेरिश साइड। और की लेवल जो इसके अंदर वॉच करने की जरूरत है वो हमारे पास सपोर्ट रीजन जो है वो 141 का रीजन है विच इज अ गुड टू accumulate the NRL share price is a good level is 141 and 127। और अगर हम इसके अंदर रेजिस्टेंस रीजन वीकली बेसिस के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास 177 एंड 189 के की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। बट अगेन एज वी हैव डिस्कस इट NRL हैज द टेंडेंसी टू मूव इन द साइडवे ट्रेंड एंड लिमिटेड जो शॉर्प वेव्स हैं वो आपको इसके अंदर नजर आएंगी। एंड द वीकली RSI इज currently showing a good momentum on bullish side। अगेन जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि डेली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन नजर आती है। और डेली चार्ट के ऊपर की रेजिस्टेंस लेवल्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो 148 एंड 141 का रेजिस्टेंस रीजन इज 159 एंड 167। सो again as we have discussed in the on the chart of KSE100, so you have to watch either it is overcoming or crossing the resistance levels or support levels। so जैसे जैसे ये अपने रेजिस्टेंस रीजन को क्रॉस करता जाएगा so its tendency to move upward जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और अगर हम वीकली चार्ट ऑफ सर्ले के ऊपर एक नजर डालें तो हमारे पास as we have seen in previous scripts and KSE100 index chart also कि मूविंग एवरेज के अंदर जो है वो बेरिश ऑर्डर नजर आता है। वीकली के ऊपर ब्लिंगर बैंड हाईली स्क्वीज्ड है आफ्टर पोस्टिंग a bullish divergence। MACD bars are converging towards zero line which is a good sign for बुलिश साइड। और अगर आप इसमें देखते हैं स्टॉकिस्टिक के अंदर तो वो अपने बेरिश रो जोन के अंदर नजर आ रहा है। सो बाय कंपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन से दैट इट विल बी इन रेंज बाउंड एरिया। ये साइडवे ट्रेंड में ट्रेड होता नजर आ रहा है आने वाले वीक्स के अंदर, बट इट्स टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड इज मोर देन इट्स डिक्लाइनिंग फेज। सो अगर हम इसका सरले को डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं तो अगेन मूविंग एवरेज जो है ये बेरिश ऑर्डर में नजर आती हैं। बुलिंगर बैंड ऑन डेली बेसिस के ऊपर हाईली स्क्वीज्ड है। MACD हैज मोर टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। और स्टोकेस्टिक जो है वो अगर हम देखते हैं सरले के अंदर तो वो भी बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है एंड इट हैज मोर टेंडेंसी टू come out of its bearish zone। बट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर जस्ट लाइक NRL हमें जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि एक emerging पैटर्न हमें चार्ट पैटर्न की शक्ल में नजर आ रहा है विच इज अ डबल बॉटम। सो कंफर्मेशन इज स्टिल टू बी देयर लेकिन it is showing because it is all other indicators are momentum indicators are exhausting at the moment, so it's showing that it has more tendency to move upward inside।
और अगर हम वीकली आरएसआई को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हमें क्लियरली जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस नजर आता है, जिसकी वजह से इट हैज द मोर टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। और अगर हम इसमें की लेवल्स को देखते हैं तो रेजिस्टेंस रीजन आर वीकली बेसिस के ऊपर 61 एंड 75, while the support region is 43, which is a good level. Above this 43 region you can accumulate the script because it will have the more tendency to move upward. और अगर हम डेली आरएसए को डिस्कस करें तो इसके अंदर जो है वो विद पॉजिटिव स्लोप इट इज मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम बेरिश टू न्यूट्रल रीजन, एंड एट द मोमेंट इट इज ट्रेडिंग इन न्यूट्रल वे। बट अगेन इसके अंदर अगर हम देखते हैं ऑन डेली चार्ट के ऊपर तो ये रीजन हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक जो है वो डबल बॉटम पैटर्न अमर्जिंग जो है वो नजर आ रहा है। एंड की लेवल्स ऑन डेली बेसिस टू वॉच आर 54 एंड 58 जो रेजिस्टेंस साइड के ऊपर आपको नजर आते हैं, एंड 50 एंड 45 जो है वो सपोर्ट साइड के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर nazar aate hain. And at the end of this video we are going to discuss the weekly chart of GHNI. Again just like other scripts, आप इसके अंदर अगर वीकली मूविंग एवरेज कार्डर देखते हैं तो हमें बेरिश नजर आता है, ब्लिंगर बैंड जो है वो हाईली स्क्वीज नजर आता है, MACD has more tendency to move upward because it has its bars are converging towards zero line after posting a bullish divergence. और अगर हम इसके स्टॉकिस्टिक के ऊपर नजर डालते हैं तो इट्स शिफ्टिंग फ्रॉम बेरिश टू its neutral zone because it has more tendency to generate a pump. It has not generated yet, but it has more tendency to generate a bullish crossover. So, according to by the comparison of all these indicators analysis, which are trend indicators, volatility indicators, and momentum indicators, we can say that this will be trading again in sideway और रेंज बाउंड रहेगा। इसके अंदर अगर हम डेली बेसिस के ऊपर इस चार्ट को एनालाइज करें so moving average again bearish order, Bollinger Band squeezing, MACD has more tendency to move upside, and important thing is this one कि stochastic जो है it has generated a bullish crossover and it's moving towards bullish side which is a good sign. और अगर इसमें आप डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं तो चार्ट पैटर्न जो है वो अगेन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नजर आता है। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, दिस इज द राइट शोल्डर एंड दिस वन इज द नेक लाइन। और अगर हम GHNI के वीकली आरएसआई को देखें तो इसके अंदर भी हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस नजर आता है विच इज अ गुड एंड क्लियर साइन that the price will have the tendency to move on bullish side rather than decline in prices. So key level to watch in GHNI are key resistance levels are 99 and 111 111 जो कि आने वाले दिनों के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल हैं। सपोर्ट साइड की ओर हम देखते हैं वीकली बेसिस के ऊपर तो 79 इज द की लेवल एंड 65 इज द मोस्ट important. Whatever you would like to buy over there you can have that one because from that level it's ensure that it will be bouncing back again. अगर हम इसके अंदर डेली चार्ट के ऊपर RSI को देखते हैं तो डेली चार्ट में RSI जो है बुलिश जोन में कन्वर्ट हो रहा है एंड इट हैज मोर टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। और डेली चार्ट के ऊपर जो है ये हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है। और इसके बाद जो है अगर इसकी नेकलाइन को देखें तो आने वाले दिनों के अंदर जो की लेवल्स हैं वो 93 एंड 104 के में रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आते हैं एंड सपोर्ट लेवल्स आर 81 and 75. So in this way we can say that overall by comparing all these scripts and KSE100 index तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो KSE100 इंडेक्स एंड स्क्रिप्ट्स हैं वो एक्यूमुलेशन फेज के अंदर चल रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल इंडेक्स को देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट इसकी इस वक्त जो है वो वेज के अंदर ट्रेड हो रहा है और दिस हैज द मोर टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड क्योंकि ये कंटिन्यूटी पैटर्न जो है वो पेनेंट की शक्ल में वीकली बेसिस के ऊपर नजर आता है। सो इन दिस वे आफ्टर few weeks we can say that if the price will be trading in the same way or in the same behavior, so after that few weeks it will have the more tendency to move upward. तो आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त जो प्राइसेस हैं ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो स्क्रिप्ट्स के लिहाज से भी देखें हमने मेजर सेक्टर्स के अंदर से मेजर स्क्रिप्ट्स को निकाल के डिस्कस किया। और अगर हम इंडेक्स की मूवमेंट को भी ऑब्जर्व करें सो दे हैव द मोर टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड रादर देन अ मेजर डिक्लाइन इन प्राइसेस। सो वीकली चार्ट जो है बेस एनालिसिस और डेली बेसिस के ऊपर जो है ये अपडेट होता रहा करेगा आने वाली वीडियोस के अंदर भी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो सिर्फ उस वक्त आएगी जब करंट डिस्कस सिनेरियो जो है दैट विल बी चेंज।